नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इस फेस्टिव सीज़न में कैसे घर पे ही फेशियल कर सकते हैं। आई लव टू डू माई फेशियल्स एट होम। आई हार्डली गो टू सैलॉन्स फॉर फेशियल, सो दिस इज़ हाउ आई डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रियली नीड अ गुड फेशियल किट एट योर होम। सो आज मैं यूज़ कर रही हूँ रियल अरोमा करेक्टिन केयर पपाया विद एलोवेरा फेशियल किट। दिस इज़ बेसिकली अ फ्रूट फेशियल किट with 5 steps and all the details are written behind of this pack कि आपको कितने मिनट कौन सा स्टेप करना है। and this is a fruit facial is good for the pigmentation of the skin. That's why I opted for this one because मेरे face पे काफ़ी pigmentation है recently, so that's why I opted for this one. So let's get started with the facial. So the very first step is cleanser. तो इसमें आपको अपनी स्किन क्लियर करनी होती है, क्लीन करनी होती है। जितना भी मेकअप है आपने रिमूव करना है। सो आई एम टेकिंग दिस क्लेंजर क्रीम और इसे अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर रही हूँ। यू कैन सी आई हैव लॉट ऑफ आई लाइनर गोइंग ऑन माई आई। सो ये इस जेल लाइनर को भी एकदम से क्लियर कर देगा, बट यू रियली हैव टू मसाज इट वेल। and according to this kit you have to like massage it for at least 3 minutes, 1 to 3 minutes, and within 3 minutes आपकी जो skin है काफ़ी साफ़ हो जाएगी। I'm also applying it to my neck area as well and massaging it down. Especially I'm focusing on my eyes जहाँ पे भी makeup ज़्यादा है, like eyes or lips, ताकि जितना भी excess makeup है वो remove हो जाए। And then I'm taking this wet tissue and with the help of this tissue मैं जितनी भी क्लेंजिंग क्रीम है उसे रिमूव कर रही हूँ जस्ट लाइक दिस। एंड यू कैन सी कि जो आईलाइनर था, जेल आईलाइनर जो बहुत पिगमेंटेड था, वो ईजिली निकल गया है। मुझे ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एंड या सो नाउ लेट्स जस्ट कम टू द सेकेंड स्टेप विच इज़ स्क्रब। स्क्रब इज़ इम्पॉर्टेंट वाइल क्लेंजिंग योर स्किन बिकॉज ये इसके जो छोटे छोटे ग्रैनुअल्स होते हैं ये ईजिली आपकी स्किन को क्लियर करते हैं। बट यू रियली हैव टू टेक केयर कि आप कितना प्रेशर दे रहे हैं स्क्रब लगाते टाइम, बिकॉज इफ़ यू आर अप्लाइंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर स्किन वाइल स्क्रबिंग योर स्किन then it can activate your glands, sebaceous glands, जिसकी वजह से आपको एक्ने हो सकता है। सो बहुत लाइट हैंडेडली आपको स्क्रब करना है और फोकस वहीं करें जहाँ पे आपको ज़रूरत ज़्यादा फील होती है, लाइक इन माई केस माई नोज़ एंड माई टी जोन बेसिकली। और अगेन आई एम नॉट लाइक डूइंग इट हैवी हैंडेडली, मैं बहुत लाइट हैंडेडली स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। एंड आई जस्ट यूज़ इट फॉर अबाउट 3 minutes। वैसे इस पैक पे लिखा है कि 5 to 10 minutes यू हैव टू डू स्क्रब, बट मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है व्हेन आई स्क्रब, सो दैट्स व्हाई आई डिड इट लाइक फॉर 3 minutes। और देन आई विल बी जस्ट टेकिंग अ वेट टिश्यू अगेन एंड जस्ट क्लीनिंग माई स्किन एज यूजुअल जस्ट लाइक दिस। सो द थर्ड स्टेप इज़ क्रीम। सो आपको अब अपनी स्किन को थोड़ा सा मसाज करना है, मॉइस्चर करना है। सो आई एम टेकिंग दिस क्रीम एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग ऑन माई स्किन और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाऊंगी ताकि मेरी स्किन सैग ना करे। आई एम मसाजिंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन और नेक पे भी लगाऊंगी। नेक पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूज़ करूँगी अपनी मसाजिंग मोशंस जस्ट लाइक दिस। और इसे तब तक मैं मसाज करती रहूँगी जब तक मेरी स्किन में ये अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए। एंड आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन माई आईब्रोज एंड अंडर आई एरिया एंड आई एम डूइंग द इन्फिनिटी साइन, एक तरह से 8 बना रही हूँ। इससे क्या है, आँखें जो हैं आपकी रिलैक्स हो जाती हैं एंड या और आपके फेस लिफ्ट में हेल्प करने में ये हेल्प करता है। एंड देन आई एम जस्ट रिमूविंग द एक्सेस क्रीम विद अ वेट टिश्यू again, and yeah, this is the third step. You can do it for about 5 minutes. Now the fourth step, that is massaging your skin with a gel. So this is a very good step for dry skin people and also combination skin people, because gel ज़्यादा moisturize नहीं करती, it just moisturizes your skin in the right amount. So I'm just gonna apply all over my face again. I'm just gonna massage it really well और तब तक massage करूँगी जब तक मेरी skin में अच्छे से seep in ना हो जाए। Again I will be massaging in upward directions, and with gel it's much easier to massage your skin if you compare it with cream. So मैं थोड़ी सी ज़्यादा massage करूँगी with gel as compared to cream, and again I will be doing the infinity sign on my eyes just to relax my eyes a bit. And yeah, जितनी भी massage strokes हैं मैं upward
डायरेक्शंस में कर रही हूँ, जस्ट लाइक दिस, जस्ट टू लिफ्ट माई आईब्रोज एंड माई स्किन अप, just like this. And I will be also doing the infinity sign on my forehead just to relax a little bit in my mind as well. And then again I'm gonna take a tissue और इससे जितनी भी excess gel है उसे remove करूँगी. Now comes the fifth step, that is pack, face pack. So I'm just using this face pack. It's a very good face pack, or it dries really quickly. So basically it's made up of papaya and it smells really good. So मैं इसे पूरे फेस पे लगा रही हूँ एक ब्रश की मदद से इस तरह से, और ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है, तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑन द पैक इट्स रिटन दैट यू कैन रिमूव आफ्टर 2-3 मिनट्स, बट मैंने पूरा फेस पैक सूखने तक इसे लगाए रखा और ये सच में 3 मिनट के बाद सूख गया था. सो मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा पैक के साथ. सो आई केप्ट इट अराउंड लाइक 5 मिनट्स. सो या आफ्टर दैट आई जस्ट रिमूव्ड माई फेस पैक और मैं इसको एक पानी की मदद से अपने हाथ गीले करके इसे अच्छे से स्क्रब करके निकाल रही हूँ ताकि निकालने में आसानी हो. सो आई एम जस्ट मसाजिंग इट रियली वेल ताकि ये थोड़ा सा वेट हो जाए और आसानी से निकल जाए. सो वंस ऑल द फेस पैक इज़ वेट अगेन, आई एम जस्ट गोना टेक टिश्यू और इसे मैं रिमूव कर लूँगी जस्ट लाइक दिस. And now you can see the difference. My skin is looking very healthy and supple. And the last step for me is to moisturize. So I am using serum, vitamin E and C serum. आप कोई भी moisturizer भी use कर सकते हैं, but I love to use serums because they are much more effective for pigmentation. So I'm just gonna apply it really well और again तब तक मसाज करूँगी तब तक वो अच्छे से स्किन के अंदर सीप इन ना हो जाए. So yeah, that's how I do my facial, and it hardly takes 30 minutes for me to do facial at home. And yes, I just love doing my facials at home, and this is the final result. My skin looks much more healthier, softer and supple. So yeah, that's how I do it. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे एक बड़ा सा लाइक दीजिए, और if you're new to my channel then please do subscribe, help me grow, and I will see you guys in my next video. Bye bye, take care.